Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you are fine. Okay, today we are going to study about the left side of the heart, the internal anatomy of the left side of the heart. And we have already done the right side of the heart, which receives the deoxygenated blood. And now we are going to study about the left side of the heart. I have a new Zoom board with me. Let me see if I can share it with you people. So let us see how this board is. I hope that it proves to be a good experience. Okay, looking nice overall. ठीक लग रहा है? Okay. Okay, now we are going to study about the left side of the heart, the anatomy, the internal anatomy of the left side of the heart. Internal anatomy of the left side of the heart. The left side of the heart receives oxygenated blood. Oxygenated blood from where? Oxygenated blood from the lungs. We have already discussed that the human heart is actually a double pump. The human heart is a double pump. It is a double pump. And this double pump, what is it? It pumps the same type of blood. The same blood is pumped through the heart twice. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो आपका जो है हार्ट है, उसके अंदर से ब्लड जो है, वही ब्लड जो है वो आपके पास जो है वो दो दफा आता है. ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट बोर्ड बिकॉज दिस बोर्ड इज नॉट एज गुड एज द प्रीवियस बोर्ड. ओके, नाउ यहाँ पर आपके पास ह्यूमन हार्ट जो है दैट इज नोन एज द डबल पंप. Double pump क्यों? Because it pumps the same blood twice. Once that blood comes to the right side of the heart, ध्यान से सुनिए, it comes to the right side of the heart and then it goes to the lungs and then it comes back to the left side of the heart. And these two parts of the heart, the left and the right side of the heart, they are completely separated. And as we all know that the heart is the main pumping organ of the circulatory system. It is pushing blood through the different parts of the body. It is the main pumping organ of the circulatory system. और ये आपकी बॉडी में पूरे ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पूरे ब्लड को जो है वो शेयर आउट कर रहा है. ठीक है, तो इस वजह से आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि इसको डबल पंप क्यों कहा जाता है. तो दोबारा भी एक दफा बता दूंगी. नाउ वी कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट सेम है कि वन ऑरिकल है या वन एट्रियम है एंड देन वन आपके पास विच इज नॉट वेरी वेरी मस्कुलर, देन आपके पास मस्कुलर, आपके पास वेंट्रिकल है. नाउ आपके पास राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का कंपैरिजन भी आ सकता है. यू कैन बी आस्क्ड टू कंपेयर द बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट. This is a question that you should expect, so you have to understand the structure of the heart very very clearly. The right side of the heart, the right ventricle of the heart is not as muscular as the left ventricle. Why? What is the reason? The left ventricle has to pump blood through the whole body. तो इसके लिए it has to exert a huge pressure and उस pressure के लिए उसके लिए फिर क्या है कि large amount of muscle जो है, mass of muscle जो है वो left side of the heart में, left ventricle of the heart में it has to be present in the myocardium. Right side of the heart, the right ventricle is not so muscular. It has a larger space. It has a larger capacity to hold more blood. The left side of the heart does not hold so much of blood, but it is very, very strong. The right side of the heart is not very muscular. It just has to push blood to the lungs, which is just very close to the heart.
and the left side of the heart has to push blood to the whole body. That is why उसके अंदर जो muscle है, उसके अंदर जो myocardium के अंदर जो cardiac muscle है, वो बहुत ही ज़्यादा है. याद रखिएगा इस बात को. Now coming back to the structure. The right auricle and the left auricle are separated by the interatrial septum or interauricular septum. ये पिछले लेक्चर में हो गया है. The right auricle and the right ventricle are separated by the right atrioventricular septum, and there is the right atrioventricular aperture present there, which is guarded by the tricuspid valve. ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व है वहां पर, जो कॉनिकल वाल्व्स हैं जो कि वहां पर आपके पास प्रेजेंट हैं. क्यों प्रेजेंट हैं? 3 वाल्व्स क्यों हैं? बिकॉज ज्यादा ब्लड इज कमिंग टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. नाउ वी कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. The left side of the heart is receiving oxygenated blood from the lungs. It is receiving oxygenated blood from the lungs, and it is the pulmonary arteries which are bringing this blood. Pulmonary arteries which are bringing this blood from the, sorry, not the pulmonary arteries, sorry, it is the pulmonary veins. The pulmonary arteries are taking blood to the lungs, and the pulmonary veins are bringing blood from the lungs to the heart. The pulmonary veins are in the mature human body. The pulmonary veins are the only veins which carry oxygenated blood. During embryonic development, umbilical vein and umbilical artery का भी function इसी तरह reversed है. लेकिन क्योंकि हम अभी एम्ब्रायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वो डिटेल नहीं बताऊंगी. वो हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे. फिलहाल आप इतना याद रखें कि पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड टू द हार्ट from the lungs, and they bring oxygenated blood, and pulmonary arteries transport oxygenated blood from the heart to the lungs. एक चीज याद रखिए कि arterial system makes up the distributory system. मतलब it is taking blood away from the heart. Arterial system, arteries, and the venous system, veins, they bring blood towards the heart. They are a collecting system, and they bring blood towards the heart. Okay, right. अब हम आ जाते हैं कि आपका जो लेफ्ट ऑरिकल है and left ventricle, it is separated by left auriculoventricular septum. Left auriculoventricular septum, just like the right side. ठीक है, and it has a left auriculoventricular aperture या left atrioventricular aperture. Aperture का मतलब होता है opening, ठीक है, रास्ता, hole, and it is guarded by a 2-flap valve which is known as the bicuspid valve. ठीक है, on the right side we had a 3-flap valve. On the left side we have a 2-flap valve which is known as a bicuspid valve, which is also called the mitral valve. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, name the various valves that are present inside the human heart. तो आपके पास मैंने आपको ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में बता दिया है, बाइकस्पिड वाल्व के बारे में बता दिया है, सेमिलुनर वाल्व्स के पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो सेमिलुनर वाल्व्स हैं उनके बारे में बता दिया है, फिर पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व्स के बारे में बता दिया है, फिर हम आयोटा पढ़ेंगे, आयोटा के अंदर भी आपके पास वाल्व्स हैं. तो वी हैव दीज वाल्व्स प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट, एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नेम द वाल्व्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन हार्ट. ठीक है, now this bicuspid valve, also known as a mitral valve, same, it is connected to the papillary muscle. Papillary muscle pimple like projections हैं which are actually extensions of the endocardium. ठीक है, और papillary muscles and the mitral valve or the bicuspid valves, they are joined together by fibrous proteins which are known as the
the fibrous proteins which are, let me write it down, fibrous proteins which are known as the chorditendini. Chorditendini. Check the spelling. Might be कि spelling कहीं से गलत ना हो गई हो. ठीक है? Okay. Chorditendini. Chorditendini is actually holding the valves in place. ठीक है? अब ये आपके पास हो गया है. Now from the left auricle, the left auricle is receiving blood from the lungs by the pulmonary veins. Now, and then it forces blood, it pushes blood into the left ventricle. The left ventricle now, it is going to, the left ventricle now is going to send blood to the various parts of the body. It is going to push blood into it is going to push blood into the aorta, which is the largest artery of the body. इस आयोटा के साथ भी हमारे पास लार्ज आयोटिक सेमिलुनर वाल्व्स जो हैं they are present. ठीक है? As soon as the aorta arises from the left ventricle, it gives out coronary arteries. ये हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है. Coronary arteries है और इन coronary arteries का काम क्या है कि it has to supply the heart muscle with blood, oxygenated blood, because the heart also needs blood. Now this aorta, it rises from the heart and then it folds backward, and at the apex of the aorta, it gives 3 arteries which supply blood to those parts of the body which are placed above the heart. Now let us go back to the presentation and let us see what we have in the presentation ताकि आपको ये structure जो है ये सही तरीके से समझ आ जाए. This is the left side of the heart. The left side of the heart is receiving blood from the pulmonary veins. This is the left atrium, and the left atrium and the right atrium are separated by the inter or left auriculoventricular septum, which has the auriculoventricular aperture, which is guarded by the bicuspid valve. ये जो बाइकस्पिड वाल्व है इसके अंदर आप देखें कि इसकी कैविटी ज्यादा है, इसकी कैविटी कम है, लेकिन द मसल ऑन द लेफ्ट साइड इज लार्जर. ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड देन इट पुशेस ब्लड इनटू द आयोटा. आयोटा इज गार्डेड बाय आयोटिक सेमिलुनर वाल्व्स. ठीक है? और यहाँ से ये फोल्ड करता है एंड दीज 3 आर्टरीज आर गिवन आउट एंड देन इट फोल्ड्स बैक. लेफ्ट फोल्ड होता है ह्यूमन आयोटा में, बर्ड्स के अंदर राइट की तरफ बेंड होता है आयोटा, ह्यूमंस में लेफ्ट की तरफ फोल्ड होता है एंड देन इट पासेस अलोंग द अंडर द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट इज देन नोन एज द डोर्सल आयोटा. डोर्सल आयोटा आपसे पूछा जा सकता है कि क्या चीज है. ठीक है? डोर्सल आयोटा आपसे पूछा जा सकता है कि क्या चीज है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट. इन द नेक्स्ट lecture we will study the cardiac cycle and the details of how the heart functions. Till now, we have completed the structure of the human heart, and I hope that you people are following the lectures. Stay connected to my channel and get continuous updates of very important topics in the easy way. Recommend the channel to your friends also and tell them to come over and listen to the lectures, which I try to deliver in very easy ways so that it can be understood by majority of the students. Okay? Best luck for your studies. Best luck for your exams, beta. See you people next time. Allah Hafiz.